All right, we're going live any minute right now, and we are live. All right, hi everyone, welcome on board. Sorry for being late. Welcome on board. Today we're going to get the party started. Today's session is really important. The master Excel sheet is coming up today. क्या हाल चल है तुम लोगों का भाई? Hope you guys can hear me. Yes, no, yes, no. Can you guys hear me? No, yes, no, yes. सुन पा रहे हैं कि नहीं? क्या बात है? 300 लोग waiting पे हैं. क्या बात है भाई? Boys and girls, today I'm going to make you meet people from IIM Ahmedabad, FMS, and also SPJain Bombay, and there's a lady from NMIMS as well. Let's get the party started. क्या हाल चल अभी तुम लोगों का? कौन आया भाई आज? लाइक ठोको फटाफट. आज 41 डिसलाइक हो चुके बिकॉज़ आज मैं लेट हो गया थोड़ा सा. सॉरी फॉर दैट. हाय अंकिता, इफ यू आर ऑन बोर्ड जस्ट स्विच ऑन योर वीडियो कैम एज वेल. दैट बी ग्रेट हेल्प. All right. Hey Ankita, boys and girls, Ankita joining in from IIM Ahmedabad. So the person who spent a lot of time on building this Excel sheet as well. जो हम कब से बोल रहे थे Excel sheet आएगी. Hi Ankita, what is your verbal percentile in CAT? Hi sir, it was 99.91. 99.91 again. We got Moinak also joining in. Moinak is joining from FMS. Hi Moinak, welcome on board. Hello sir, hi Ankita. Hi. Great Moinak, welcome on. Moinak, तेरा percentile क्या था यार overall और verbal और LRDA बता. My verbal was 99.95, LRDI was 99.73, and OA was 99.71. 99.71 overall. Great. We got Anisha as well joining in here. Anisha, welcome on board. Anisha is a Narsi Monji topper. Anisha, what is your CET percentile and Narsi Monji percentile? Hi everyone. So I was 99 percentile in NMAT, SNAP, CET, CMAT, all of these exams. Oh my fucking lord. Boys and girls, let's have fun and let's get to the grill. और आज हमारी एक्सेल शीट आनी शुरू होगी. पहली बात, बिफोर वी गेट स्टार्ट, बिफोर आई शेयर माय स्क्रीन, अंकिता ये एक्सेल शीट वगैरह जरूरी है क्या जिंदगी के अंदर? पहले तो ये बताया. सर एक्सेल शीट तो बहुत जरूरी है. आज तुम जैसे ही एमबीए में घुसोगे तुम्हारी बस एक्सेल की दुनिया चलेगी. एक्सेल और पीपीटी यही दुनिया चलेगी. इवन आफ्टर एमबीए ऑल द जॉब्स वेदर इट्स मार्केटिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, एवरीवेयर इट रिक्वायर्स एक्सेल. सो गेट यूज्ड टू इट एंड योर लाइफ विल बिकम इजी स्टेप बाय स्टेप. Excellent. Moinak, you're from FMS यार. ये क्या Excel sheet का क्या चक्कर है? Why you should plan all your things? Why you need to put down all the mocks as well? What's your take on that? Right. So Excel जो चीज के लिए दिया गया था, that was to store data, and likewise the way you build your CAT will be based on data. That is by taking mocks, what have you studied, etc. Only if you know what you have done, you don't need to think about अरे ये कर रखा है. You can only focus on what's ahead. So that's what Excel sheet will help you with, guys. That's amazing. Anisha, what's your take on Excel sheet? Why we need to have an Excel sheet for a business school examination? You're an NMAT topper, by the way. She got into Marico. ये बंदा Mastercard के अंदर है. अंकिता और ये हमारा भाई अभी TAS के अंदर जा रहा है. Tata Administrative Services is like the place to work in. This is so amazing. So people who join in late, we've got people from FMS, SPJain Bombay, Narsi Monji, and IIM Ahmedabad to guide you as well. This is so amazing. Anisha, what's your take on that? So see, for any exam, it's all about the strategy. And when you can start putting in facts, numbers, and everything on an Excel sheet, your strategy automatically gets on track because you will track the progress and monitor it. So I think Excel is needed for anything and everything. Forget your mocks. You want to achieve any other goal in life also, track it and put an Excel and put metrics to all of them. बहुत ही amazing. Bhai, sound is amazing. Can you guys hear me properly? Yes or no? On the chat button, just type in yes, yes, yes. Sound clear है क्या? Can you guys hear me? No, yes, no, yes. Can you guys hear me? Just yes, yes, yes type कर दो and we're going to get the party started. All good? Can you guys hear me? ठीक है भाई, ठीक है. चलिए भाई शुरू करते हैं. पहली बात, अंकिता, when did you start preparing for a CAT? And also people are starting preparing for CAT in the month of June. Is it a good time to start? क्या strategy होनी चाहिए इनके दिमाग के अंदर? और जो लोग अभी start कर रहे हैं, क्या ये 6 महीने के अंदर CAT crack कर सकते हैं कि नहीं? अंकिता. So definitely crack कर सकते हैं. So in my final attempt when I got into IIM Ahmedabad, at that time I had started preparing around July because I had given CFA. So CFA level 1 was due in June. So after that July. So if you're starting from June, that's a very good start for you. If you can take a step forward and prepare all your basics and just start. First of all, I'll say just start. Don't think. Stop inertia को तोड़ दो और बस start कर दो. एक बार स्टार्ट कर दोगे तब वो निकल जाएगा. चलिए, दिस इज सो अमेजिंग. मोनिक, व्हाट्स योर टेक यार? 6 महीने कोई बंदा दिन के 3 घंटे रोज पढ़ रहा है यार, क्या वो एफएमएस क्रैक कर सकता है क्या? I think it's very easy to clear CAT in 6 months, and I think if you just start taking mocks from now, and we have around 30-35 mocks to target अगर रखते हैं, that's around 5 to 6 mocks per month. I think it's good enough time. You can solve 2 hours and
maybe put in 4 to 5 hours of analysis behind it. So yeah, I think it's a great time period to clear the CAT. बहुत amazing. Anisha, what's your track? Anisha is one responsible for sending people to 1000 IIMs from NMIMS and NMIMS topper or CET की भी 99.96% आई थी. Anisha, what's your take on that? 6 महीने जो बंदा rigorously follow करेगा, एक proper Excel sheet में maintain करेगा अपना data, do you think he can crack CAT? Definitely. See, you can crack as long as you are focused and you have a strategy in place. So it's doable. 6 months is a lot of time. It's only how about you making use of that time in a good focused way. क्या बात है. चलो भैया, let's get to the rig and let's bring our Excel sheet on the system right now. I am just going to be sharing this. Let me know if you guys can see my screen as well, and we're going to begin. हाँ भाई, on the chat, can you guys see the screen? Before I start explaining this, इसका link आपको मिल जाएगा immediately after session. अभी link मत ढूंढना, पहले पूरा का पूरा session सुन लो, नहीं तो अगर समझ नहीं आएगा तो Excel sheet download होके पड़ी रहेगी और तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या करना क्या इसके बारे में. ठीक है भाई, let's begin. So what I'm going to be doing is in this just a second, in this entire video, what I'm going to be doing is I'm going to be telling you this Excel sheet is planned in 4 different ways. ध्यान सुनिए. Number one, we're going to be talking about CAT 6 months plan. जो लोग अभी preparation start करने, जून मंथ के अंदर क्या करना चाहिए आपको उसके बारे में बात करेंगे. Ideal number of mocks कितने देने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे. एक देना चाहिए, दो देने चाहिए. जुलाई के अंदर क्या करना है, अगस्त के अंदर क्या करना है. This Excel sheet going to be made you will be made available to you as well. इसको बाद में सुन सकते हो, पर पहले प्लीज पढ़ लो. अगर तुम्हें पढ़ा नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, Excel sheet पड़ी रह जाएगी कहीं पे. ठीक है. All the toppers who crack CAT. Ankita, did you have your own Excel sheet when you were preparing for CAT? Kind of, yes. I had a schedule, not an Excel sheet, but yes, I had a schedule for according to which I like followed the plan and prepared for myself. Excellent. पर तू मॉक देने के बाद देखती थी एक बार कि यार कौन से मॉक के अंदर कितने नंबर आए, कहीं पे नोट डाउन करती थी कि नहीं? Definitely, sir. After mocks, you need to know where did you go right, where did you go wrong. Otherwise, how will you strategize for the next one? You cannot just randomly go on giving the mocks. Lovely. Moinak, how about you? You cracked FMS यार 99.71 all together यार. Amazing बंदा तू, तूने बड़ी मेहनत करी, मैं जानता हूँ तेरे को. But क्या तू ये maintain करता था preparation plan, कहाँ पे क्या लिखना? I know you're a very organized guy by the way. But what's your take on that? Moinak, can you hear us? Okay, we'll come back to Moinak. I think we got some network issues. Anisha, how about you? You think maintaining an Excel sheet is going to be helping them? Absolutely, it's going to help you to stay on track all throughout, and especially when we are going to be talking about, the mock analysis dashboard, you should be maintaining that without fail. Like, for example, I was someone who used to, have a habit of writing in a diary and a journal. So I used to write every mock while I'm giving on a paper, which was filed and kept as well for while you're solving, how you're mapping it, and then put the same thing back into an Excel so that you have it for reference and you can keep analyzing, because you should not forget which mock you gave in June, what mistakes did you do in October. You can't afford to make the same mistakes again. So please make sure you watch the entire analysis and how to go ahead and making this Excel sheet really well. Make notes, understand, and execute it. It's very important to follow good practices from others when you are taught that. Excellent. So मैं हमेशा बोलता हूँ, life is too short to do your own mistake. Learn from really bloody other people's mistake. दुनिया की और mistake से learning करो. इसलिए पहली mistake what people do is they don't maintain their Excel sheets. Let's begin. Let me just read out all these things for you. भाई full concentration चाहिए आप लोगों का. Let's begin. Number 1, जून मंथ में क्या करना है? पहली बात सिर्फ एक काम करो. जून मंथ के अंदर 2 से 3 घंटे आप लोग पढ़ाई कर सकते हो. तो 2 से 3 घंटे, अगर मेरे को पूछो तो 3 घंटे every day. अंकिता, you've cracked IIM Ahmedabad. जो बंदा जून से 3 घंटे रोज पढ़ता है, क्या वो कैट क्रैक करके अहमदाबाद जा सकता है? Definitely, sir. I think I had also studied 2 to 3 hours every day. I was working, so along with work, I used to study. So yes, 2 to 3 hours consistent effort is what you need for cracking any B school. So बहुत ही बढ़िया. मोइनैक 6 महीने पढ़े पूरे कैट को अभी, 6.5 महीने टू बी मोर प्रिसाइज. ये 6.5 महीने अगर ये लोग पढ़ सकते हैं, अराउंड नियरली 180-190 दिन, क्या ये कैट क्रैक कर सकते हैं 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे रोज पढ़े तो? Absolutely, sir. I think one just needs to put in 2 to 3 months of effort to cover the main aspects about CAT, get the understanding of their base. Then maybe another month on identifying strengths, weakness. Then 2 months in refining things, and you are ready to take the paper head on.
That's so amazing. By the way, disclaimer, boys and girls, even if you're a CATKing student or if you're not a CATKing student, this Excel sheet will be made available to you और आप इसको use कर सकते हो. Let's begin. Number 1, जून मंथ के अंदर पहली बात तो फाउंडेशन और बिगनिंग पे बात करनी है. सब लोग बोलते हैं फाउंडेशन करो, बिगनिंग की करो, पर लोगों को पता नहीं होता क्या करना चाहिए. टारगेट नंबर 1 रखना कि जून 30 तक, ठीक है, जुलाई 30 तक, जुलाई 30 तक अभी से लेके जो लोग CATKing का 40 डेज चैलेंज ज्वाइन करते हो, जहां पे भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, अभी से शुरू करो, वेडनेसडे से शुरू करो. कोशिश करना 40 दिन के अंदर एक बार बेसिक्स खत्म हो जाए. बेसिक्स खत्म हो जाए मतलब पता होना चाहिए मॉडर्न मैथ्स क्या है, वर्बल एबिलिटी क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है. यार ये मॉडर्न मैथ्स मेरे को चमकता ही है. ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल कैट सिलेबस. तो पता होना चाहिए. पहला काम एक करना, 2 से 3 घंटे, रूल नंबर 1 फॉर द डे नोट कर लो. 2 से 3 घंटे रोज पढ़ना है, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग. सुबह उठते हो तो पहला काम ये काम करो कि 3 घंटे बैठ के इसको खत्म करो. क्लियर ऑल द कंसेप्ट एंड फोकस ऑन द SWOT एनालिसिस. ये SWOT एनालिसिस क्या है यार? अंकिता, कैन यू जस्ट स्पेंड लाइक फ्यू मिनट्स ऑन दैट? यू फ्रॉम IIM अहमदाबाद. यार ये लोग ड्रीम करते हैं IIM अहमदाबाद जाने के लिए, और मोइना बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं SPJain बॉम्बे, सॉरी FMS जाने के लिए. सॉरी SPJain बॉम्बे भी, इसने SPJain बॉम्बे भी क्रैक किया था, मेरे को याद है. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. व्हाट आर द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स? Ankita, you can spend few minutes on the same. Sure, sir. So this SWOT analysis is basically done based on your mocks, whether it is sectional mocks or full length mocks. In the mocks, you will analyze which are your strength areas. So suppose you're giving quants, there are different sections there. There is Vedic maths, there is arithmetic, algebra, geometry. You will be good at some areas and you will not be good at some areas. So you need to identify what are your strengths, what are your weaknesses. Suppose for non-engineers especially, probability is something which is a weakness and which is something, and that's also a threat for us actually. We are not very good with that. At least I was not very good with that. So I identified that my weakness is this area. I will come back to this, but at a later point of time. But for opportunity, maybe geometry was a point where I found myself that it's an opportunity for me, because with a little more effort, at least I can crack the basic sums and get marks. At the end, in CAT, it's not about hard work, it's about smart work where you can get your score. You don't have to show anyone whether you got your score from arithmetic completely, or from geometry, or from probability. How you have to just get the score. How you get it is not the concern of anyone there. Lovely, yaar. Let me go back to Moinak. Moinak, you're 99.71 CAT, yaar. FMS crack किया तूने. भाई जिनका ड्रीम कॉलेज FMS है, just type in FMS. जिनका IIM अहमदाबाद है, type in IIM अहमदाबाद. मोइनाक यार, तेरा थ्रेट क्या था यार जब तू प्रिपरेशन कर रहा था? लग रहा था कि भाई ये तो दिक्कत है, कि तेरा सब सेट था, भाई मैं तो फाड़ ही दूंगा टाइप्स? No, sir. So I had one particular thread that was at least 50% of quant for me. So I spent a good amount of time in reducing that 50% to 25%. And that's where an Excel sheet came very handy, right? And at the same time, everybody will have some amount of thread. One has to determine whether we should go ahead with it or leave it out altogether. That's what I think Ankita also mentioned in her statements, that the examiner doesn't really care how you get your marks. As long as you get it and you have the right percentile, you have the interviews, you make it to the college. So that's the only simple philosophy one has to follow. लवली यार. तो जून और जुलाई मंथ के अंदर LOD लेवल 1 करिए, ट्राई करिए अपना सारा सिलेबस खत्म करने के लिए. भाई पॉइंट नंबर 2 फॉर द डे इज अगस्त 15 तक यार बैठ के इंडिपेंडेंस डे तक अपने सारा का सारा बेसिक्स खत्म होना चाहिए. अप्रोक्सीमेटली 80% टू 100% ऑफ द सिलेबस खत्म होना चाहिए. जो लोग टॉपर थे, जो लोग सोच रहे मेरे को करना चाहिए, टारगेट रख लो भाई अगस्त 15 तक सारा का सारा सिलेबस खत्म हो. अनीशा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने इन लोगों को क्या चीज पे फोकस करना है? बिकॉज आई नो नारसी मोजी आना शुरू हो जाएगा एंड देयर बी अदर एग्जामिनेशंस कीप ऑन पॉपिंग देम इन देयर हेड. FMS का फॉर्म का डेडलाइन के लिए वेट करना शुरू कर देंगे. तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर इनको क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? So first thing, September, these 3 months are very, very important. What happens a lot of time is everybody starts with a great motivation and then fizzes out. So don't do that. Okay. Once you're done with your syllabus, these 3 months, very, very important. Focus on one is revising your complete syllabus. Irrespective of maybe whether it's percentages, which you think it's like the super easiest thing, you still have to revise. So it's very important to revise in all throughout in the 3 months. September, put that as your target, like you've done the SWOT analysis. Pick out your weak areas, learn new things. Till September, you are good to keep learning new things. Okay. So in September, जो भी चीजें नहीं अच्छी लगती थी या नहीं पता था, try a new method. Try a new approach towards it, but learn the new things on the weak areas. October should be your month, which is to
maximize your potential. Okay, so what you're going to focus is now only on your strengths. Learn more shortcuts, more techniques. How can you save more time? Maybe there was a question which you were able to do in, say, 1.5 minutes. Maybe there's a way you could do it in 1 minute. And trust me, 30 seconds in any competitive exam means a lot. So, keep valuing that shortcuts and techniques to keep emphasizing. Build your own accuracy and attempts ratio so that you can maximize your scores. At the बहुत end बढ़िया. of the day, that matters. Excellent, excellent. Moinak and Moinak, you were working before your CAT, if I remember, right? तू job कर रहा था साथ में. Right, sir. Great. तो तूने एंड में कुछ छुट्टी ली थी, कैसे प्लान किया था? मतलब लास्ट के, because November month is the most ideal month when you to leave everything. In fact, October 15 के बाद, October 15 is my birthday as well, but yeah, October 15 से लेके November 28 तक क्या thought process होना चाहिए? नौकरी करो तो नौकरी छोड़ दो कि तूने छुट्टी ली थी, क्या प्लान था तेरा? So unfortunately, I did not get any leaves because I worked in equity research, and that period is a very heavy period for us. So I managed somehow. Unfortunately for me, so my job demanded at least 12 to 13 hours a day. So I was used to handling that kind of pressure and just being in the flow. And I feel if you're just consistent with your prep right from June, you wouldn't feel the pressure once the CAT is near your head. And it'll just feel okay. Things are just going in the flow. I just need to remember that on this day I need to give my best. Yes, one thing I definitely follow is that one day before CAT, away from each and every electronic device, away from friends, etc. Just you, your thoughts, especially afternoon slot people. This is a thing for later, but I'll tell you now itself. Never ever contact the morning slot people. You have to go with a clear mind, and trust me, that's the best thing you can do to yourself on D-Day. बहुत बढ़िया. तो भाई मॉर्निंग स्लॉट नंबर 1 होता है, स्लॉट नंबर 2 होता है, स्लॉट नंबर 3 होता है. तुम पहले जाके स्लॉट नंबर 1 दोगे. जिन लोगों ने कैट, भाई एनीबॉडी हियर हु हैज अपीयर्ड फॉर कैट 2020, जस्ट टाइप इन कैट 2020 एज वेल. और जो लोग कैट 21 की प्रिपरेशन कर रहे हो, जस्ट टाइप इन कैट 2020 2021 एज वेल. तो स्लॉट नंबर 1 होगा, सुबह जाओगे तुम, कैट पेपर देके आओगे, स्लॉट नंबर 1 वालों से बात करोगे, तेरा पेपर कैसा हुआ. वो तेरे को अच्छी रिपोर्ट नहीं देने वाला है, क्योंकि कैट के अंदर 50% मार्क्स पे तुम्हारा 99 परसेंटाइल आ जाता है यार. और अगर नॉन इंजीनियर हो तो 90 परसेंटाइल पे तुम्हें IIM अहमदाबाद मिल सकता है. अंकिता, तेरा कितना स्कोर था यार? 50% के आसपास था कि ज्यादा था? So it was exactly 50%. So I got 154 scale score out of 300. क्या बात है. तो जिन लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, 50% मार्क्स इज इक्वल टू ब्लडी 99 परसेंटाइल एंड IIM अहमदाबाद. ये देख लो भाई, ये बंदी बैठी हुई है IIM अहमदाबाद के अंदर, 154 स्कोर, 50% मार्क्स एंड IIM अहमदाबाद. बट मैं हमेशा बोलता हूँ, टॉपर बनना है तो थोड़ा और पुश करो, अंकिता से भी आगे जाने की कोशिश करो. वी आर हियर टू गाइड यू अप, टू मोटिवेट यू कि थोड़ा और करना है. तो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर मंथली प्लान. ये मैं आपको शीट दे दूंगा, आप लोग डे बाय डे पढ़ सकते हो. वन क्विक टिप, ये 3 बुक्स आपको प्रिपेयर करनी, इसके अंदर लिखा हुआ है टॉप जर्नल्स व्हाट टॉपर मेक्स एज वेल. फॉर्मूला बुक बनानी चाहिए, मॉक्स की मिस्टेक बुक बनानी चाहिए, वोकैबुलरी की नोटबुक बनानी चाहिए, और एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी चाहिए मॉक्स के लिए. ये नंबर 1 है. दूसरी, क्विक अपडेट ऑन द रियल कैट मॉक्स एज वेल. Moinak, you have spent a lot of time on real cat mocks. Ankita, you have spent a lot of time on real cat mocks. Can you just quickly brief about real cat mocks? ये है क्या है यार, ये कैसे बनाए तुम लोग, IIM अहमदाबाद के लोगों और टॉपर लोगों, क्या थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे? Right, so Real Cat Mocks is made by a team which has Ankita, Anisha ma'am, and a few of our batchmates from our respective colleges. So we run a thorough analysis of the kind of questions that have been coming in CAT. We try to match the kind of LOD that has been happening. We increase the LOD by 10 to 20% so that you are ready for the additional pressure that is going to come with D-Day, right? So we always stay prepared. Let's say if it's a 1 kilometer swim, you have to practice for 4 kilometers. Then you will be at your best for the 1 kilometer swim, right? So that's the kind of philosophy we are putting in this. At the same time, we also put in a lot of effort with solutions. Unlike a lot of places, what we do is not just focus on the correct thing. We also tell you why the other 3 things are wrong. And I think it is of utmost importance to understand that also, because let's say if this path will lead me to the wrong answer, you will never take that, right? But if you're unaware altogether, then what's the point? So that is why even in the mock analysis dashboard, which you will see in the later part of the presentation, we have added a part for incorrect things also, and not just correct things. And as Anisha ma'am rightly pointed out, if you get a thing correct, do not forget to analyze it. You might get a new method. And trust me, I'll just give a short example of my CAT. I attempted 16 questions. I had 1 minute left. Okay, CAT 2018. I just went to one particular question. I'm like, अच्छा, ऐसा तो कुछ देखा हुआ है. तुरंत I just did a minor calculation, took a very smart guess, put an answer. Luckily, it was correct. And that made all the difference from 99.48 to 99.73 in LRDI. That's why, guys, knowing right, wrong, and your own methods makes all the difference for you.
बहुत बढ़िया. And Ankita, these all mocks, the real CAT mocks at CATKing, are they solved by all those folks from IIM Ahmedabad, Moinek and FMS and 99% level? How is it? Yes, sir. So we had our friends from IME and FMS, and they are like 99 plus, and even 100 percentilers are there. So we have gone through all the mocks. We have analyzed all the questions and try to answer each and every one of them so that they are in line with what the students can understand and not just what we are trying to teach. It is self-explanatory, and hopefully students find it useful as well. बहुत बढ़िया. तो मोइनेक ने 1 किलोमीटर चार्ज, मैं उसकी गरीब लेवल पे समझा रहा हूँ. मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर तुम्हारा लेवल 2 रुपए का है, मोइनेक तेरा एग्जांपल मैं रुपए में बता रहा हूँ, अगर ये कोई अगर तुम्हारी औकात 2 रुपए की और मोइनेक की औकात 5 रुपए की है और अंकिता की औकात 5 रुपए की है, दोनों टॉपर है भाई कैट के, और भाई ये 2 रुपए की औकात, जस्ट वंस यू डन विद द कैट, सिट विद मोइनेक, ही इज गोइंग बी सिट विद मोइनेक, मतलब वर्चुअली ही इज डन रिकॉर्डेड सेशन ऑफ द सेम. इसको जाके आप टेस्ट कर सकते हो. इफ यू आर नॉट अ कैट किंग स्टूडेंट, इसको बैठ के रियल कैट का नाम, जो भी तुम्हारे मॉक्स हैं, एक्सेल शीट का तुम्हें लिंक मिल जाएगा, उसको तुम चेंज कर सकते हो, XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसके साथ में डेट लिखो और ये बहुत बहुत अमेजिंग रहेगा. ठीक है, ये है मेरा टैब नंबर 2, ये आपको मिलेगा. अच्छा, बाय द वे, टैब नंबर 4 इज गोइंग टू बी कमिंग अबाउट फ्री रिसोर्सेज एज वेल. जो रिसोर्सेज आर फ्री फॉर एवरीवन, 4-4 घंटे की वर्कशॉप्स है, देयर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन YouTube. वो आप सिंक अप कर सकते हो, काफी आपको मजा आने वाला है. ठीक है, एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए. अगर 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 आपने लाइक नहीं ठोका है, 1000 वीडियोस लिंक अप करने के लिए एक्सेल शीट के लिए तुम लोगों ने इतना लाइक ठोका, और आज ऐसा करोगे भाई तुम, हाँ, लाइक ठोको फटाफट. 622 लोग हैं हमारे साथ. ठीक है, लेट्स बिगिन. दिस इज माय फेवरेट शीट by the way. Ankita, do you want to quickly explain them what is this acclimatize phase, ये डिफेंस फेज क्या है और ये अटैक फेज क्या है? ये 3 फेज जो होते हैं कैट की प्रिपरेशन के अंदर. व्हाट आर दीस 3 phases? Sure, sir. So, sir, if we go back to CAT 2020, we know that there was no set pattern of the number of questions that would come. We only knew the duration of the exam, which was 2 hours. So at that time, everyone was accustomed to the 3-hour mock, 100 question mock. We were accustomed to that, but shifting to 2 hour was very difficult. So these 3 phases help us, understand whatever comes our way. If we get like acclimatize phase will help you understand कि कहाँ पे तुम कैसे क्या कर रहे हो, तुम्हारे questions तुमको जो आ रहे हैं तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. That will help you getting used to all the questions, the basics and everything. Defense phase is where when if a question is there, how do you analyze it, and how do you basically analyze your strength, weakness and everything. An attack is when you know when you have how you have to reach the highest score and get the 99 plus percentile. That attack will help you plan that. And defend your scores at that time. You've acclimatized, मतलब पहले 5 मॉक दे दो, जो भी हुआ यार, जैसा भी हुआ, अपने आप को जज मत करना. लोग पहला मॉक देते हैं कैट के अंदर, ओ सर मैं उड़ गया, और टॉपर लोग बोलते हैं सर मैंने पहला मॉक दिया था, आई जस्ट adjusted to the whole thing, I prepared really well, but मेरे को पता था I was not in the mood, I've not done my syllabus, but after giving the mock I could analyze कि यार मेरा verbal ठीक है, DLR difficult है और क्वांट तो मतलब लगी पड़ी है टाइप, तो they know that, और they say सर क्वांट तो मैं कर लूंगा, वर्बल DI आप संभाल लो एंड क्वांट आप देख लेते. इसको बोलते हैं एक्लिमेटाइज फेज. पहले 5 मॉक तक, इनफैक्ट 5 से 10 मॉक तक अपने आप को जज मत करना, और एक एक्सेल शीट को कैसे यूज करना उसके बारे में बताऊंगा. मोइनेक, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अबाउट ए कैट प्रिपरेशन यार, इन द एंटायर प्रिपरेशन तेरा एक्लिमेटाइजेशन फेज, डिफेंस फेज, अटैक फेज सब किया, बट इन द एंटायर जर्नी वर यू फीलिंग इन बिटवीन के यार ये क्या हो रहा है, एंड योर जर्नी वाज लाइक दिस, और वाज इट लाइक अ कंप्लीट लाइक बैंग ऑन चक दे फटे टाइप? हाउ वाज इट? No, absolutely not, sir. Like every great player, even Sachin Tendulkar once said that, everybody hits a slump. So similarly in CAT, you are bound to hit slumps. There will be a particular point where you will be stuck. You'll not see yourself increasing. And that's where you will use the SWOT analysis and actually identify what are the opportunities you're missing out on. As soon as you identify that, it'll take around 4 to 5 mocks. You'll see a month goes in a slump. Suddenly you'll see a 30% rise. Slump, 30% rise. Slump, 30% rise. So in fact, I can tell you the highest mock score I had was the mock 1 week before CAT. And that is when I was sure, okay, now I can crack the CAT. So my CAT was on my birthday, 26th of November. And 1 week prior to that, in 19th November, I had the confidence, yes, I can clear CAT. So yes, it's a long journey and I didn't have it very smooth right from the beginning.
ग्रेट। तो समझ रहे हो भाई, ये टॉपर आदमी निकल के ग्रेजुएट होके बोल रहा है मेरी जर्नी स्मूथ नहीं थी, और जिनको लग रहा है सर मेरी जर्नी स्मूथ नहीं है, मैं की करा, मेरा क्या, भाई ये टॉपर लोग हैं, निकल चुके हैं अभी, कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके हैं। ठीक है, लेट्स कम टू द एक्शन राइट नाउ। हाउ टू यूज दिस एक्सेल शीट, दिस वीडियो वी डूइंग फॉर द एक्सेल शीट एज वेल। देखो भाई ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन, व्हाट यू गोना बी डूइंग इज, चेक इट आउट, देयर इज अ टैब कॉल्ड एज राइट क्वेश्चंस। तुमने अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन तुम्हारे राइट हुए, सपोज करो तुमने 76 क्वेश्चन का मॉक दिया या 100 क्वेश्चन का मॉक दिया, ठीक है, ऊपर लिख देना तुमने 100 क्वेश्चन का मॉक दिया। ये सब एक्सेल शीट फॉर्मूला बेस्ड है, धीरे धीरे इतना इतना तुम्हें दिमाग चलना चाहिए कि तुम इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने सपोज करो 50 राइट किए, 10 रॉन्ग किए, और अनअटेम्प्टेड तूने छोड़े 40 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़े तूने कैट के अंदर, बिकॉज टोटल क्वेश्चन है 100, 50 10 और 40 100। तेरी एक्यूरेसी कितनी थी? 83% की। तेरा स्कोर आया 140 का, और परसेंटेज मार्क्स किया 87%। हर मॉक के अंदर तेरे को पता होना चाहिए कि तू कैसे अटेम्प्ट कर रहा है। ये मॉक नंबर 1 से स्टार्ट करना है, मॉक नंबर 2 पे जाना है, RC 5 RC जो भी तुम्हारे पास मॉक्स हैं एट CATKing। इफ you're using this Excel sheet, if you want to become a topper, I would recommend to get the CATKing series as well. It's going to be really helpful. मैं हमेशा बोलता हूँ जिंदगी में अगर IIMs जाना है तो 2 मॉक सीरीज हमेशा ज्वाइन करनी चाहिए। अगर तुम CATKing स्टूडेंट हो तो पहले सिर्फ CATKing करिए, इसके बाद वाला जो सेकंड वाला लेना है मैं आपको बता दूंगा कौन सा आपको सीरीज लेना है, और जो लोग नॉन CATKing स्टूडेंट हो डेफिनेटली आप लोग ले सकते हो, बट एंड ऑफ द डे 2 मॉक सीरीज आपके साथ होनी चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर ऑफ कैट एज वेल। रियल कैन मॉक देना, उसको देखो यार कितना तूने राइट किया, और अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो। तुम्हें एक्यूरेसी पता नहीं है, मैं पूछता हूँ एक्यूरेसी कितनी है, सर 83% है, सर 85 है, सर 80 से 90% एक्यूरेसी। भाई 80 से 90% एक्यूरेसी में 10% का फर्क होता है भाई, कम ऑन डूड, आर यू किडिंग मी? 10% आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इज लाइक 10%, 10 क्वेश्चन, मजाक नहीं है यार। ये बैठ के लिखो, और पता होना चाहिए कि मॉक नंबर 5 और 4 के बाद तुम्हारा डिफेंस फेज आ गया। व्हाट इज डिफेंस फेज? व्हेन यू स्टिकिंग विद योरसेल्फ, व्हेन यू राइटिंग इट डाउन कि भाई मैंने कैट के अंदर, मैं हमेशा बोलता हूं टू स्टार्ट विद, इवन इफ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, इवन इफ यू गेटिंग 6 क्वेश्चन राइट इन ईच द सेक्शन, दिस इज इक्वल टू 85% इन कैट। ध्यान सुनो, 6 क्वेश्चन राइट इन ईच सेक्शन इज इक्वल टू 85% इन कैट। पर पंगा ये कि तुम ये सहन नहीं कर पाओगे। जब 6 क्वेश्चन राइट इन सेक्शन में होते हैं तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे। पर तेरे को अपना परसेंटाइल मार्क्स देखना है, कितने लोग तेरे आगे हैं। एंड इफ यू सी, हे यू नो व्हाट, 15% लोग ही मेरे साथ आ गए हैं। मॉक नंबर 2 देना, और मॉक नंबर 2 के अंदर 7 क्वेश्चन राइट करना, और मॉक नंबर 3 तक जाके 8 क्वेश्चन राइट करना, और इस एक्सेल शीट को मेंटेन करना, ये बहुत इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस एक्सेल शीट इज दिस। Ankita, do you want to add something to it? You have a similar Excel sheet which you are maintaining percentage. तेरा क्या फंडा था? Accuracy पे खेलती थी कि speed पे खेलती थी तू? So definitely accuracy, because speed will go up and down that day. You cannot judge yourself even on that day. Speed will depend upon the type of questions you get. But if you know that if you've attempted 10 questions, those 10 questions are right for sure, then don't go for the 11th question if you're not sure, because that will just reduce your marks. It will not increase it, right? So definitely accuracy, go for accuracy. That will only help you in increasing your scores. Great. Moinak, what is your strength? Speed तेरी strength थी कि accuracy तेरी strength थी? No, sir. I played on accuracy. Even in my CAT, I attempted 63 questions, out of which 59 were correct. So I had only 4 incorrect questions in my CAT. क्या बात है। पर मोइनेक, जब तू कैट देके बाहर आया था तेरे को लग रहा था भाई फाड़ दिया है मैंने, कर दिया है, आई हैव अराइव्ड, के लग रहा था भाई पता नहीं क्या करके आएंगे, बाद में देखेंगे? Absolutely not. So if you ask my father, I think he will say that was the most dejected face he had seen of mine. I was sure I will have to repeat CAT or kill ZAT. I was absolutely not confident, but somehow I had 100% accuracy in LRDI and 90% accuracy in VRC. So that saved my board that day. Excellent, boys and girls. So there are toppers talking to you. तो टॉपर के पिताजी बोल रहे थे कि भाई तू क्या करके आया एग्जाम के अंदर, समझ रहे हो? तो भाई कैट प्रिपरेशन ऐसे जाने वाला है जहाँ पे तुम्हें भी नहीं पता होगा क्या होगा, बिकॉज सिंपल फंडा यार, 50% मार्क्स लेके आने हैं। ये जितना हम अपना इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ना, ये आधा घंटा हम इसी के लिए लगा रहे हैं, तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा यार ये 50% मार्क्स लेके आने। पर प्रॉब्लम ये दिमाग की भसड़ हो जाती है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे 10 क्वेश्चन तुम्हारे सामने वाला है, पहला करेंगे, दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा करेंगे, चौथा कर लेंगे, पांचवा भी कर लेंगे, छठा छोड़ देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके ओवरऑल तेरे अगर 5 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, मतलब तू 6 अटेम्प्ट कर रहा है यार, और तेरे 5 ठीक हो रहे हैं, एक गलत हो रहा है या एक गलत भी नहीं हो रहा है। पहले 10 क्वेश्चन तेरे सामने आए, उसके अंदर 6 किए, 5 क्वेश्चन ठीक ठाक अटेम्प्ट कर दिए, एक तेरा गलत हुआ, अगले 10 क्वेश्चन तेरे सामने आए, तूने 5 क्वेश्चन पकड़े और 5 के 5 ठीक हुए, फिर भी तू IIM अहमदाबाद जा सकता है। समझ रहा है?
फिर भी तो IIM अहमदाबाद जा सकता है और तेरा 0 करेक्ट हुआ। तो पहले एक्यूरेसी की गेम खेलो, दोनों टॉपर तुम्हें यही रिकमेंड करेंगे। स्पीड वेट अपन बाद में देख लेंगे, इट्स गोना बी डूएबल। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फ्री रिसोर्सेज। ग्रेट अनिशा, इफ यू कैन टेल अस लिटिल बिट अबाउट द फ्री रिसोर्सेज, क्या क्या फ्री रिसोर्सेज है हमारे पास? So all of the people who have not started your preparation, where you can get started, there are certain videos available for you which are how to start your preparation when you're starting from June. Then there are certain very important topics where we talk about, like for example, arithmetic. That's the heart and soul of every competitive exam, leave alone just CAT. So a full master class with toppers done on arithmetic, DILR, certain techniques to make sure that one, you understand which sets to select. Second, you understand the approach ki even if I selected one set, uske kuch questions shayad ho payenge, shayad nahi ho payenge. So how to solve those sets and how to move ahead and get your shortcuts fixed for DILR. Then also similarly, reading comprehension. I mean, all the engineers, I would say, watch this at least 3 times. I'm an engineer myself. It took me time to make verbal reading comprehension my strength. Okay, but you were able to do, I was able to do that by the end of it by just practicing and understanding the type of questions. It's not rocket science. So watch these videos. It will be really helpful for you to understand the approach towards your entire preparation. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो भाई ये तुम्हारे लिए कैट 2020 जून से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, वीडियो पे क्लिक कर लेना, ये देख के सुन लेना यार। अर्थमेटिक की मास्टर क्लास है, बाय द वे DLR की तो 4 घंटे की मास्टर क्लास है, डन बाय द टॉपर्स ऑफ कैट, 99-100% DLR। भाई 100 के हो गए अपना, इतना तो देना बनता है। और जो लोग अभी तक चैट के अंदर जुड़े हुए, लाइक पक्का ठोको फटाफट। देयर इज गोना बी 4 आवर्स क्लास, इसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा जब तुम एक्सेल शीट डाउनलोड करोगे। नीचे एक्सेल शीट ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा, नहीं तो मैक्सिमम 2 AM इन द नाइट तक आपको अपलोड करके मिल जाएगा। यू विल हैव 500 वर्ड्स लेस देन 1 आवर। ये 1 घंटे के अंदर आपको 400-500 के आसपास वर्ड्स हैं, 1 घंटे के अंदर 500 वर्ड्स। अनिशा, कौन सी सीरीज है ये? which सीरीज इज दैट? This is the vocab series. So where you're doing powers playlist, entire playlist for अच्छा, प्लेलिस्ट है, बहुत बढ़िया। तो अप्रोक्सीमेटली 100-200 वर्ड होंगे यहाँ पे, ये भी आप देख सकते हो, ये भी आप फटाफट बैठ के, ये नॉर्मल इसकी मेरी वर्ड परमिट दी है। बहुत लोग मेरे को पूछते हैं सर एओन एसएस का लिंक दे दो, व्हाट इज एओन एसएस? प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होती है, AEION लिखते हैं। भाई ये ले तेरा लिंक, ये तेरे को पड़ा हुआ है। ये क्या है? कैट के सोर्सेज हैं, कहां से कैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, वो ये वाला सोर्स है, ये देख लीजिए। इसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, व्हिच इज गोना बी ग्रेट। फ्री मॉक टेस्ट एज वेल। भाई 100 के फैमिली हो चुकी है, दिस गोना बी वन फ्री मॉक कैट इफ यू गाइस आर कीन ऑन checking out the real CAT mocks as well. My humble request to all the toppers, people who are preparing for CAT, who are aiming for IIM Ahmedabad, Bangalore, give this free mock फटाफट। नहीं देना है तो फटाफट CAT के real CAT mocks ले लो, because we're aiming for IIM Ahmedabad. Don't wait for free things to coming on board. People who are like hard on their pockets right now, can't afford, blah blah blah, free mocks are also available for you. But the toppers, just go and buy it. It's going to be around at 1900 odd rupees. It's going to be amazing, and it's done by IIM Ahmedabad Fox, और इस बार का पेपर सेटर is IIM Ahmedabad। जो लोग CAT के टॉपर बनना चाहते हो, गेट दिस एज वेल, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है आप लोगों का, आप लोग डिस्कशन कर सकते हो। बाय द वे देयर फ्री ई बुक्स एज वेल, ये बहुत अमेजिंग सेक्शन है। ये एक्सेल शीट के अंदर आपको लिंक मिलेगा, यू गाइस कैन चेक आउट सम फ्री ई बुक्स एज वेल। इसके अंदर काफी अमेजिंग ई बुक्स है, एक्सेल शीट भी यहाँ पे पड़ी होगी, आप लोग चेक कर सकते हो। अगर आपको कैट के पुराने पेपर का एनालिसिस देखना है, सर मेरे को कैट के पुराने पेपर का एनालिसिस दिखा दो सर, 2017 में कैट पेपर कैसे आया था, 2018 के अंदर कैट पेपर आया कैसा आया था, वो भी आप चेक कर सकते हो। गो इन हियर, क्लिक ऑन 2019, 2018, 2020 एंड ऑल द पेपर्स आर आल्सो क्विक update is also given to you. They are really amazing. तो मैं बोलता हूं भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, ये भी चेक कर लीजिए। 2019 पे क्लिक करना, 2000, ये मेरे एनालिसिस है। बाय द वे शिक्षा.com पे भी 5 साल से मैं ही एनालिसिस कर रहा हूं, 2020 से लेके 2010, पिछले 10 साल के एनालिसिस पड़े हुए हैं, देख लेना। स्पेंड 15-20 मिनट्स ऑन द सेम, टेक योर नोट्स, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल, ठीक है। ये आगे आपको बताने के लिए इसका लिंक आपको मिल जाएगा। कैट के एग्जाम का एनालिसिस मिल जाएगा। एनमैट की स्ट्रेटजी देखनी है, ये क्लिक करना वीडियो, एनमैट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्नैप की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इट्स गोना बी हेल्पफुल। XAT की स्ट्रेटजी, तो इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल, और ये बहुत अमेजिंग है, ठीक है। ग्रेट। एनी पार्टिंग थॉट्स टू ऑल दीस पीपल? मोइनैक यार, इनका ड्रीम कॉलेज FMS है भाई, FMS ओपी हो जाए चैट के अंदर, इनका ड्रीम कॉलेज FMS है यार। एक्सेल शीट का लिंक इनको अपन दे देंगे, बट व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एनी फाइनल पार्टिंग थॉट्स? Right, guys. So I would emphasize on one thing, that your preparation needs to be at least 50% higher from today itself. Okay. I'm sure if you must have noticed the admission criteria of FMS this year, we did not call 1010 people for the GDPI. Only 770 people were called. So automatically the bar was raised from 99.26 to 99.53. That was the last call that went to a general engineer mail. Okay.
So we will keep that only as a target, irrespective you're a female candidate, non-engineering candidate, all that doesn't matter. Treat yourself as a gem, then only you'll prepare like that. And let's hope you'll hit your targets. So if your college is FMS, the stakes are high, guys. You really need to hit 99.73 plus. तब जाके आपका सपना जरूर सच होगा. Yeah, and I believe everybody can crack it. So all the very best. Lovely. So amazing, yeah. Ankita, what's your take on the same as well? You guys have worked hard on getting the mocks sorted. You guys have worked hard on getting the Excel sheet sorted. What's your take on that? जो लोग अभी preparation start कर रहे हैं, क्या हो सकता है? Can these guys crack CAT? Sure, so definitely they can. I'll just say one thing which you need to keep in mind always: have a cutoff, whether that is on your time, whether that is on your syllabus. So if you remember when you were giving class 10, 12 boards, प्री बोर्ड्स कब होते थे? जान में होते थे. तुम्हारे बोर्ड्स कब होते थे? मार्च में होते थे. 2 महीना पहले तक तुम्हारी सिलेबस फुल कंप्लीट होनी चाहिए, राइट? सो इवन फॉर कैट, इफ इट्स इन नवंबर, बाय सितंबर एवरीथिंग शुड बी डन. सो उसी को अपना कट ऑफ बनाओ कि सितंबर तक मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है. पूरा सिलेबस का 3 महीना का टारगेट नहीं बना सकते, तो उसको वापस डिवाइड करो हाफ में. एंड इंडिपेंडेंस डे का, जैसा सर ने बोला, इंडिपेंडेंस डे तक का टारगेट करो कि एटलीस्ट LOD 1 वाला बेसिक सेक्शन कंप्लीट हो, and LOD 2 start career another 1.5 months you have. So make your target that way. One more thing which I would like to emphasize, and which Anisha ma'am has also said, is that in October, November, December, these are the months when other exams come in, right? You will get distracted at that time. You don't have to get distracted. आप distract कब नहीं होगे? जब आप already prepared होंगे. And that time is you will utilize for your revision. So be prepared कि distractions आने वाले, not just in terms of exams, in terms of form filling, in terms of your anxiousness कि mock कब निकालेगा, मतलब official mock कब निकलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, लोग कौन सा mocks दे रहे हैं, मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, दूसरे कोचिंग का mocks. ये सारे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर से. उससे पहले आप प्रिपेयर्ड रहो ना, बिकॉज आपके आसपास के लोग आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करेंगे. सो माय सजेशन इज जस्ट हैव अ कट ऑफ फॉर एवरीथिंग. And while giving mocks on the D-Day as well, have a cutoff. अगर 100 minutes अगर 100 questions का है तो कितनी questions आपको attempt करने हैं? 1 घंटा का mock है तो 1 घंटे में आपको 40 minutes के अंदर आपको कहाँ तक पहुँचना है, 20 minutes आप कहाँ utilize करोगे. So always have a cutoff, तभी आप पहुँच सकते हो, because that cutoff will that is your target, right? That will be your target always. Badhiya, yaar. Anisha is an RC Munji topper, worked in Marico and killing it right now. Anisha, what's your take to all these people? मतलब preparation करेंगे, मेहनत करेंगे, they can crack CAT? Absolutely. So I will just say one simple thing for you guys. Hard work will never go waste. So please make sure you put in all your best efforts. Keep studying, keep monitoring the same, and definitely the results will come out. So don't get bogged down by anything. क्या बात है. This is so amazing. तो भाई all said and done, एंड में ना ऐसा छोटा सा मैसेज कर देना है. पूर्वी का मेरे को मैसेज आया, मोइना तेरी जूनियर भेज रहा हूँ मैं. हाय सर, इट्स पूर्वी निगम दिस साइड, वन ऑफ योर स्टूडेंट्स. थैंक्स अ लॉट, ऑनलाइन है वैसे अभी. थैंक्स अ लॉट फॉर योर एफर्ट्स एंड टाइम यू गेव अस. गोइंग टू आस्क पीपल टू जॉइन CATKing if they need any help. Today I could convert FMS by God's grace. Bang on. और मेरी कॉल हुई थी, it was great interacting with you. Probably it was the first time I could talk to you directly because हमारा one-on-one call हुआ था. Once you get a call, you know, you guys can get in touch with me one-on-one as well. पर बड़ी मेहनत करी है. Thank you genuinely for all your efforts. भाई ऐसा एक मैसेज कर देना, यही एजेंडा है हमारा रात को 12:30 बजे तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए. और दिस इज द ऑब्जेक्टिव फॉर वी गेटिंग ऑन बोर्ड. और आज मैं SPJain बॉम्बे हूँ, मोइना एक FMS है, अंकिता IIM अहमदाबाद है, अनीशा नारसी मुंजी. 4 मतलब बेस्ट ऑफ द कॉलेज इन द कंट्री आर कमिंग एंड हेल्पिंग यू गाइस एज वेल. तो यार बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ मेहनत करो. एंड वी ऑल लुक अप फॉर दिस फाइनल डे व्हेन यू एक्चुअली गेट इट राइट मोइना. वो जिस दिन तुम बाहर आते हो, खुशी अलग होती है, isn't it? Absolutely, sir. Absolutely, sir. And we would love it when all of our students are able to clear their dream colleges, and we are here, absolutely here. You just need to reach out, and that's it. Excellent, excellent. तो भाई एक काम करना, you bloody get us a call and we'll convert it for you. अंकिता क्या बोलती, चैलेंज लेती है कि नहीं? Once you get us the IIM Ahmedabad call, by the way 51 people are going to IIM Ahmedabad who going to be juniors of Ankita. अंकिता एक बार कॉल आ गई तो कन्वर्ट करवा देंगे? So we'll try our best to do that. We have amazing mentors on board. So we'll try our best to convert the call. ग्रेट है. मोइनाक तो कमीना आदमी, इसने SPJain बॉम्बे छोड़ा था FMS के लिए. ये पैसे बचाने के लिए गया था FMS. चल ठीक है, मेरा भी होता था, मैं भी वहां चला जाता क्योंकि सस्ता कॉलेज है. बट एक कमीना आदमी, मैं आई हेट हिम फॉर दैट. बट वी मिस यू एट SPJain फैमिली. बट मोइनाक SPJain बॉम्बे FMS कॉल आएगा तो कन्वर्ट करवा देंगे भाई. Absolutely, sir. We will give our best. In fact, we'll give 200%. We just expect the student to give 100%, and
That'll be more than enough. क्या बात है अंकिता अनीशा एनी पार्टिंग थॉट्स कॉल आ गया तो कन्वर्ट करवा देंगे बाय द वे अनीशा ने 1/3 ऑफ नारसी मोंजी इज ट्रेन्ड बाय अनीशा इनफैक्ट आज ही इनका कॉल हुआ है पीपल आर गोइंग टू नारसी मोंजी अबाउट 200 प्लस लोग हैं फ्रॉम कैटकिंग फैमिली ऑल बिकॉज ऑफ अनीशा अनीशा कॉल आया तो कन्वर्ट करवा देंगे भाई बिल्कुल सर करवा देंगे like trust me you'll have best mentors best dashboards best curriculum available बस तुम कॉल तो लेके आओ then leave the efforts and how to make you all do the efforts also we know the hack so we'll make you do that. So amazing, yaar. Thank you so much for joining in. Boys and girls, say a big thank you to Anisha and say a big thank you to Ankita and big thank you to Moinak. So, रात को 12:30 बजे recent graduate of all these colleges that and coming to you guys to help you out और Excel sheet बना रहे हैं दे रहे हैं नीचे लिंक मिलेगा आप लोगों को उसको डाउनलोड करो उसको यूज करो और spend time on the Excel sheet before saying अरे कौन अपडेट करेगा and it's going to be great. Thank you बोलो भाई फटाफट. I'm waiting for you guys to say a thank you as well. Okay, they're all saying thank you. All right, great, yaar, great. And CATKing family OP ho jai bhai. CATKing family is really amazing. It's not only me, it's these people who are running the show behind my back. मैं कप्तान of the ship हूँ. मैं भी Titanic देख रहा था वैसे. I'm the captain of the ship, but हमारे साथ एक सह कप्तान है who running the show. मोइनाक है और अंकिता है, अलीशा है, सुधांशु है, हम लखनऊ के बहुत amazing लोग हैं. बस तुम मेहनत करो यार ये कोई इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करके मेहनत करो and things will fall in place. Thank you Moinak. Thank you so much for a great time yaar. Thank you so much. Thank you so much, sir. All the very best, guys. All the very best. Bye, Ankita. Thank you so much for your time. These guys are awesome. And stay glued, Ankita. Keep rocking. Thank you, sir. All the best, everyone. Great. Bye, Nisha. Have a good day. Bye, everyone on the chat as well. We're going to have a lot of fun. And thank you so much for all the CATKing family. बस अगले साल रिजल्ट लेके आना और इतना पढ़ना कि अगले से अगले साल जब तुम IIM घुस जाओगे तो ऐसे अंकिता की तरह मोइना की तरह तुम्हें बुला पाऊँ भाई आ जाओ और हमारे साथ एक सेशन कर लो और थोड़ा बच्चों के लिए इंस्पिरेशन कर लो. And Ankita, I must say you're an inspiration for many people. Moinak, you're an inspiration for many people. Yeah, you've done it and now you're helping people. You know, it takes guts to even help people as well. Yeah, and you've done it. Thank you so much. Yeah, thank you so much. दिल से यार. Thank you so much, sir. ठीक है. Bye guys. Take care of yourself. Have a good day ahead. Good night. Bye bye. रुको